औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मौजूद स्टूडेंट्स को, अपने तमाम मौजूद सामाईन को अपने यूट्यूब चैनल उमैर अहमद ख़ान पर खुशामदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक आपकी खिदमत में लाया हूँ वह है ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड फंक्शंस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते क्या हैं और हर एक डिवाइस का फंक्शन क्या होता है, वो हम इस लेक्चर में बात करेंगे। Transitional devices are words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. Transitional devices कुछ अल्फाज या कुछ phrases का मजमुआ हो सकते हैं जो कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का रिलेशनशिप बताने को या एक सेंटेंस का आइडिया दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए या एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ रिलेशनशिप बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। Transitional devices link sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between the ideas. ये जो डिवाइसेस हैं इसलिए सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के दरमियान में इस्तेमाल की जाती हैं ताकि कोई भी सडन जंप्स या ब्रेक्स आइडियाज़ में या सेंटेंसेस में या फिर एसेज में या फिर स्टोरीज में ना हो। There are several types of transitional devices and each category leads readers to make certain connections or assumptions. Some lead readers forward and imply the building of an idea or thought, while others make readers compare ideas or draw conclusions from the preceding thoughts. जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और हर एक डिवाइस का फंक्शन या जो यूज़ है वो डिफरेंट होता है। जैसे कुछ जो है वो आइडिया को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ कंक्लूजन के लिए, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ प्रूव करने के लिए, कुछ जो है सीक्वेंस बताने के लिए। ये सारी जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जिसको हम इस डिटेल में आगे की लेक्चर में या आगे की स्लाइड में डिस्कस करें। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जैसे सबसे पहली जो ट्रांजिशनल डिवाइस है वो एडिशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए हमने लिखा कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस दैट कैन बी यूज फॉर एडिशन आर एज फॉलोज एंड अगेन एंड देन besides, equally important, finally, further, furthermore, not to, next, lastly, what's more, moreover, in addition, first, second, etc. ये सारी वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो कि एडिशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि मिसाल में मैंने लिखा, besides his famous cake, the bakery also makes delicious breads and cookies. He was now a king, and what was more, a well beloved king. अब यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। सेकंड डिवाइस जो ट्रांजिशनल डिवाइस है वो कंपैरिजन की है, उसमें कौन कौन से अल्फाज होते हैं। Whereas, but, yet, on the other hand, however, nevertheless, on the contrary, by comparison, where, compared to, up against, balance against, with, but, although conversely, meanwhile, after all, in contrast, although this may be true. Example, for example, I'm sorry, but we have decided not to come after all. Ahmed was watching a TV, meanwhile his brother finished his job. ये दो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, देखें, जो कि किस लिए इस्तेमाल हो रही, कंपेयर के लिए। टू प्रूव के लिए जो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जो अल्फाज हैं वो क्या हैं। बिकॉज, फॉर, सिंस, फॉर द सेम रीज़न, obviously, evidently, furthermore, moreover, besides, indeed, in fact, in addition, in case, that is, etc. For example, obviously, television has both advantages and disadvantages. Every man's vote must be public for the same reason that votes on the floor of the legislature are public. ये दो अंडरलाइन जो हैं ये एग्जाम्पल हैं आपके पास। टू शो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के लिए, yet still, however, nevertheless, in spite of, despite of course, once in a while, sometimes ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि he was very tired, nevertheless he went on walking. I like a challenge once in a while. टाइम के लिए जो सीक्वेंस मार्कर्स इस्तेमाल होते हैं, जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, वह इमीडिएटली, देयर आफ्टर, सून आफ्टर, अ फ्यू आवर्स, फाइनली, देन, लेटर, प्रीवियसली, फॉर्मली, फर्स्ट, सेकंड, एटसेट्रा। ये सारी, फॉर एग्जांपल, सी एलिफेंट्स एंड फर्स्ट सील्स वर फॉर्मली प्लांटिफुल, देयर आफ्टर दे डिड नॉट स्पीक। इससे पहले कोई और भी सेंटेंस की कंटिन्यूशन है, लेकिन मैंने चूंकि ये वर्ड बताना था इसकी एग्जांपल, तो मैंने इसको यहीं से लिख लिया। टू रिपीट के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इन ब्रीफ, एज आई हैव सेड, एज आई हैव नोटेड, एज हैज बीन नोटेड। फॉर एग्जांपल, एज आई हैव सेड बिफोर, द एजुकेशन इज इन अ पिकल। और दूसरी एग्जांपल में, एज आई हैव नोटेड, यू आर नॉट वर्किंग वेल।
To emphasize, definitely, extremely, obviously, in fact, indeed, in any case, absolutely, positively, naturally, surprisingly, always, for, perennially, eternally, never, emphatically, unquestionably, without a doubt, certainly, undeniably, without a reservation. ये सारे अल्फाज एम्फेसाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के तौर पे देखें आप, ही इज़ अनक्वेश्चनेबली the best tennis player in England. We can't naturally fly, so we can make airplanes. सेकंड है सीक्वेंस मार्कर्स भी इनको कहते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो फॉर्थ. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह भी हो सकता है. ए बी सी डी एंड सो फॉर्थ भी हो सकता है. नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग दिस, एट दिस टाइम, नाउ, एट दिस पॉइंट, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, सब्सिक्वेंटली, फाइनली, consequently, previously, before this, simultaneously, concurrently, thus, therefore, hence, next, and then, soon. ये सारे अल्फाज सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे she didn't like pudding, consequently she threw it all away. What became of him afterward our friends never knew. ये एग्जाम्पल है जनाब इसकी सीक्वेंस मार्कर्स की. और फिर जो है एग्जाम्पल के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस, इन अनदर केस, on this occasion, in this situation, take the case of, to demonstrate, to illustrate, as an illustration, to illustrate. ये सारे अल्फाज हैं जो कि एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के तौर पे आप देखें, in this situation we need some assistance. In another case, the guy has been dead 9 years. और फिर इसी तरह समराइजेशन के लिए या कंक्लूजन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनमें, इन ब्रीफ, ऑन द होल, समिंग अप, टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, एज आई हैव शोन, as I have said, hence, therefore, accordingly, thus, as a result, consequently. For example, the roads were covered in ice, hence it was not safe to drive. He is carrying, therefore he must be hurting. He is crying, therefore he must be hurting. ठीक है. अब आपने देखा कि इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी थे जो कि रिपीट हो रहे थे किसी एक फॉर्म में, किसी दूसरी फॉर्म में. तो ये इस तरह जिस फॉर्म में जो रिपीट हो रहा है वो फंक्शन के एतबार से किसी भी वो डिफरेंट फॉर्म में वो फंक्शन कर सकता है, वो उसमें उसका हिस्सा बन सकता है. बहरहाल ये मैंने आपको जनरल आइडिया ट्रांजिशनल डिवाइसेस का और कौन कौन सी हैं, मैक्सिमम जितनी भी हैं मैंने आपको वो बता दी हैं. इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इससे जो है वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे. अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो. इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.